joining me on the News Hour tonight is Basuri Swaraj, Member of Parliament from the BJP, in charge of this area, the New Delhi Member of Parliament. Let's listen in if she has any answer. Joining me tonight on the News Hour at 9 is Basuri Swaraj, Member of Parliament from the New Delhi constituency, where this unfortunate incident occurred in Old Rajendra Nagar. Basuri ji, thank you very much for joining me. You've said that this loss of 3 young lives which have been snuffed out in this incident of water flowing into a basement of the Rouse Study Circle is criminal negligence. I want to ask you tonight, on behalf of all those parents who send their children to these coaching classes, criminal negligence on the part of whom? On part of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party. And I say this with tremendous responsibility, Navika ji. I'm going to actually back this up with facts. Let me actually begin by informing the people of Delhi through you that in Delhi, the Sarkar is of Aam Aadmi Party, the Chief Minister is of the Aam Aadmi Party, the Aam Aadmi Party has 60 plus MLAs, the MCD is under the control of the Aam Aadmi Party with 134 councillors, the mayor is of the Aam Aadmi Party, and in Rajendra Nagar, where this unfortunate tragedy took place, the local MLA is Mr. Durgesh Pathak ji, who is an Aam Aadmi Party MLA. The MCD councillor is Aarti Chawla ji, who is also a parshad from the Aam Aadmi Party. Now, I want to actually tell you on a larger scale. On the 18th of June 2024, the Honorable Mayor of Delhi, Shelly Oberoi ji, actually held a press conference where she claimed that 103% target of desilting of the drainage and nalas in Delhi has already been achieved. Her claim was that Delhiites are going to enjoy monsoon. On the 5th of July 2024, the Honorable Minister Shri Saurabh Bharadwaj, who is the Irrigation and Flood Control Minister, as well as the Jal Mantri, Honorable Atishi ji, held a joint press conference. And they said that a 24-hour control room has been set up, already set up. And they will actually collect real-time data and take care of and resolve any waterlogging problem. I want to ask them what happened. Today, they are making excuses. Today, when their apathy, when their criminal negligence, when their inaction has led to the death of these students, they're actually making excuses by saying that none of the officers are in their control. I want to ask them, the moment they have to do a press conference, how come that time all the officers, the entire government machinery, everything is in their control and command? Now, regarding this particular incident, but Basuri ji, they have said that they have reported this matter to the Home Ministry, and they have said that officers do not listen to them. That complaint has been made to the Home Ministry, no less. My point here being, where do citizens go? On the one hand, there is the Aam Aadmi Party government, which says that it is helpless. On the other is the BJP, which says it is their job to do it. Janta jaye to kahan jaye? नविका जी, चुनी हुई सरकार है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की। ये अपने निकम्मेपन पर लाचारी का आवरण क्यों डाल रहे हैं? ये जो ट्रेजेडी हुई 22 जुलाई 2024 से स्थानीय निवासी माननीय दुर्गेश पाठक जी से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया इस नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए। आप जानती हैं कि माननीय विधायक जी ने व्यंग करा और ट्वीट करा, लेकिन एक्शन नहीं लिया। 24 जुलाई 2024 का दोबारा निवेदन करा गया, इन्होंने कुछ नहीं करा। वो फोटो इनके संज्ञान में थी जल भराव की। 27 जुलाई को मात्र पौने घंटे की बारिश में इतना पानी भर गया था कि 12 फुट का वो जो बेसमेंट था वो पूरी तरह जलमग्न था। मैं खुद मौकाए वारदात पे थी। मैं आपको बता रही हूं, माय हार्ट गोज आउट टू दोस
students and their families who've lost their lives in this. लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि जब एमसीडी आम आदमी पार्टी की है, यहां पर दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, पार्षद आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद, 60 से ज्यादा एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, एक दशक से सत्ता भोग रहे हैं यहां पर, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो अपनी लाचारी व्यक्त कर देते। पर दशकों तक एमसीडी में बीजेपी भी थी, नहीं है। For many decades the BJP ruled the MCD. 2 वर्षों से, and for the last 2 years who is controlling the MCD? The Aam Aadmi Party. In fact, I'll tell you something which is very pertinent to note. Do you know, पिछले साल जब फ्लडिंग हुई थी उसके बाद एक कमिटी बनाई गई थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, सीईओ दिल्ली जल बोर्ड एंड कमिश्नर ऑफ एमसीडी। इन लोगों ने एक प्रपोजल बनाया था 8 अगस्त 2023 को, डीसिल्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन्स इन दिल्ली एज वेल एज मास्टर ड्रेनेज प्लान ऑफ दिल्ली बाय दिल्ली जल बोर्ड। This proposal was sent to the Honorable Minister Shri Saurabh Bharadwaj ji on the 21st of August 2023. He sat on the file for 5 months. 2 फरवरी 2024 को वो फाइल वापस भेजते हैं ये कह के कि प्रेजेंटेशन लाइए। सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर 8 अप्रैल 2024 को ये फाइल अधिकारी पुनः ऑनरेबल मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी को भेजते हैं। आप शॉक्ड होंगी, पिछले 3 से 3.5 महीने से ये फाइल माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी की मेज की शोभा बढ़ा रही है। I don't know. Let me ask you another question. Okay, there have been gaps. Even if I take your word for it that there have been gaps in the performance of the Aam Aadmi Party Sarkar, I want to ask you, the Delhi government or the Delhi statehood has not been given fully to a government here because it's the capital city, and the capital city needs to be under the home ministry so that it can be beautified, it can be kept in a manner that is befitting the capital of a country. What happens to that claim, Basuri ji? What happened to the capital city? Is this what we want to see in the capital city? Navika ji, you remember? No, I'll tell you what. Navika ji, you remember that constitutional judgment जिस पे डंका बजा बजा के आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें क्या कहा गया था? लॉ एंड ऑर्डर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, वेरी लिमिटेड थिंग्स आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सड़क की मेंटेनेंस, दिल्ली में ड्रेनेज की मेंटेनेंस, सीवेज की मेंटेनेंस, डीसिल्टिंग ऑफ नालाज, ये सब की सब पूर्णतः केवल और केवल आम आदमी पार्टी से सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री अपना पल्ला इस तरह नहीं झाड़ सकते। मैंने कहा ना, इतने बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं कि 103% तो डीसिल्टिंग का इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, 24 आवर का इन्होंने कंट्रोल रूम बना लिया, लेकिन जब 3 बच्चों की मौत हो जाती है इनके निष्कर्म के कारण, तो अपनी निष्कर्मता पर ये लाचारी का आवरण ओढ़ते हैं और दोषारोपण करते हैं अधिकारियों पर। जो 3 महीने से मास्टर एक्शन प्लान फॉर डीसिल्टिंग एंड ड्रेनेज ऑफ दिल्ली है, उसकी फाइल पे तो माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी बैठे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? So let me ask you, Basuri ji. Basuri ji, since we have got down to politics in this particular case, there are 2 students, one from Kerala, one from Telangana, and one from Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, the opposition party there, Mr. Akhilesh Yadav, has asked for action on officials. Rahul Gandhi spoke in parliament today, did not raise the issue. Is this convenient politics because nobody wants to name the Aam Aadmi Party simply because there is an India alliance, and raising questions will mean raising questions on Arvind Kejriwal, who's operating as a chief minister from Tihar jail, and tomorrow they have to all get together to support Kejriwal on his being in jail. Is this the state of politics, and is this anything that a common man can take any respite from?
नविका जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो हर चीज पे चिट्ठी लिख देते हैं अपने माननीय मंत्रियों पर, वो इस त्रासदी पर चुप क्यों हैं? He has not spoken a single word about this tragedy, about the death of these students. He's in jail. Not only that, ये आप he's in jail, लेकिन वहां से भी वो चिट्ठियां तो लिखते हैं ना। हमेशा ये जो टॉल क्लेम्स इनके मंत्री करते हैं कि चिट्ठी आई, भाई दिल्ली की बड़ी परवाह करी उन्होंने, ये लापरवाही नहीं तो क्या है? और मैं एक बात आपको बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। गठबंधन धर्म निभाते निभाते इंडी अलायंस हमेशा राष्ट्र धर्म और राष्ट्र हित की बलि चढ़ाता ही चढ़ाता है। इसलिए आज ना माननीय नेता प्रतिपक्ष इस इशू पर बोले और अखिलेश जी ने भी घुम्मनघेरी करी। बांसुरी जी, इन ऑल ऑफ दिस जनता कहां जाए? मेरी बहुत ज्यादा संवेदनाएं हैं इन बच्चों के जिनकी जान गई है और उनके परिवारों के साथ। मेरा आक्रोश केवल एक सांसद के तौर पे नहीं, बल्कि दिल्ली की एक नागरिक और दिल्ली की निवासी होने पर भी है। और मैं आपको सच बता रही हूं, जनता बेहाल है, आम आदमी पार्टी सत्ता के मुंह में मदमस्त है। I don't know if these words will satisfy parents of these 3 young children who've lost their lives. 23-year-old, 25-year-old Naveen, Tanya and Shreya. I don't know if these words will bring any comfort to their parents and their families. Questions will continue to be asked, but Bansuri Swaraj, you are a member of parliament. Please do something to make a difference to these lives. We don't know. We don't know where to go. That's exactly why we raised it in parliament today, and we've asked for is, and we've specially requested for a committee to investigate this and to investigate into the apathy of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi. Well, apathy is there. Discussions in parliament are there. But is there going to be accountability, or is it going to be RIP accountability, because there is a political blame game that's center stage? We leave it at that. Thank you very much, Bansuri Swaraj, for joining me on the News Hour tonight.